Hello, welcome to Aapki Khabar. As you know, HR Success Talk and Aapki Khabar organizing a series of talk show HR Par Charcha. In this series today we have Ms.Shaifaly Sanghal. Shaifaly Sanghal is founder of Young Minds and Women with Wings. She brings about 21 years of industry experience. Young Minds is all about the HR services, and Women with Wings is a platform which talks about the women collaboration. Kafal is leading the awards vertical of HR Success Talk and soon launching Global Excellence Awards. Because of being organizer of HR Success Talk, and today we will discuss here with Ms. Shaifaly Sanghal about the 15 minutes about the aspect of the HR. And first, I would like to welcome again Ms. Shaifaly Sanghal. And first thing, Aapki Khabar viewers would like to know here, share your journey with HR Success Talk in the awards vertical. No. Thank you so much, Rajiv ji and Aapki Khabar for having me here on behalf of HR Success Talk. Thank you so much. So, as you wanted to ask about my journey, so it is a beautiful journey, I should say, which started in almost November 2019. And there is a very beautiful story behind it. I would like to share it here for our viewers, and I love to talk about it. So, what happened is that I generally, because HR Success Talk, we all know, is known for conducting string meets and assessments, a lot of things. So, in I think November 2019, they had one of their string meets in City Fort Auditorium, Delhi. And I happened to visit them and attended their session. The session was so interesting that I became a hardcore fan of HR Success Talk. And there only I decided that kuch bhi karna pade, but I will join this community. Then I started connecting with Deepti. She introduced me to Govind. We had some conversations. And when I was having those conversations, I did not know कि मुझे क्या करना है. The idea was just to join this HR community. And he asked me, why do you want? I said, I don't know. I'm just passionate about HR, just connecting with people, and I have to do something. We explored, we brainstormed, we had a lot of discussions. And I was so determined. I told him कि आप मुझे registration desk दे दो, table कुर्सी उठाने का काम दे दो, कुछ भी दे दो. And I want to be a part of this community because I'm so hooked with the kind of session you arranged. And after having so many conversations, we finally landed up in creating a platform for of awards. And he asked me to lead that vertical. So that was, I should say, the great start for me with HR Success Talk. And after that, there is no looking back. We started with first award, with second award, and now we are on the verge of launching our fifth awards. So I enjoy being HR Success Talk. The beauty of this platform and me working here is that I am on my own. I take my decisions. It is not that कि मुझे गोविंद की ही हर चीज में या HR Success Talk की मुझे approval चाहिए. I just need to inform them that I am taking these decisions and what are the basis of taking these decisions. And then I am on my own. I love working on my own. So that's the beauty of me working with HR Success Talk. Yeah, very good. Uh, as you have worked for the last 21 years in the field of HR, and most of the time we see companies recognizing their employees. And in your opinion, what is the best practices which companies can use for rewarding and recognizing their employees? So I feel there are a lot of strategies which a company is following and can follow to recognize their people. Of course, recognizing is the best thing which anybody has to do in order to, for creating the brand value, the brand image of the company, and having the employee retention. So I think the most common strategies used by many of the organizations are giving a retention amount to the top talent, salary revision, hefty increments, internal job transfers. When they see a vacancy coming up or they foresee any vacancy coming up, then nurturing, guiding, and trying for the internal movement instead of hiring an external person.
बाहर से लाने की जगह अगर आप अंदर इंटरनल मूवमेंट कर देते हैं तो वो ज़्यादा बेटर एक वैल्यू एडिशन हो जाता है कंपनी में और एम्प्लॉय रिटेंशन भी हो जाता है. I feel besides these job satisfaction and all these things, there are a lot of other things which motivates people. Holiday packages for company, for the family, giving them some dining coupons, giving them some, buying some stuff for their family. Maybe some companies depends. There are a lot of schemes depends from company to company. Some companies do R&R events in 5-star, 7-star hotels. Somebody does in off-site. They take to Goa, they take to Maldives or some international location, and they do. But nowadays, and I think this pandemic has also taught us that one of the major areas where companies are focusing these days is recognizing the work done by the people. And how we can recognize is, one is that okay, मुझे gift voucher मिल गया, I'm happy, but I feel in branding myself. जब 50 लोग मेरे को देखते हैं and they feel good about me, they appreciate me, I love that. So I think one of the most common strategies which is now being followed these days is recognizing the work of the people, appreciating them in open, creating their posters and putting at social media, appreciating them, giving them rewards. And communities like HR Success Talk, and there are a lot of other platforms coming up and recognizing the talent. So afterwards, what happens is if somebody has got reward and recognition from, just for an example, HR Success Talk, and they go back to their company and show them, hey, I got this award, company also feels proud. It is a win-win situation for both the employee and the company. And what they do is then from their company social media handle, they share that our employee got this award, he or she was felicitated or recognized, the work was recognized. So they feel very proud about it, and the employee also feels very good about it that my work is recognized, my company is giving me due recognition. So I think this is one of the major aspect, because when we started in HR Success Talk, this reward thing, very few communities were there. But now as the time is passing by, I see so many 10, 20, 30, hundreds and thousands of communities coming forward and recognizing the talent. It is always a different, altogether different experience when you are recognized by somebody outside who doesn't knows what you have done. They just listen to you. They have a certain parameters to identify your work, your caliber, what you have done. And when they recognize you, it is a, I'm telling you, it is a deep feeling of satisfaction actually. Yes, yes, yes. So the most important thing is, I think, satisfaction. It is the most Yes. important thing. And as you said earlier, you are leading the awards vertical of HR Stock, and many achievements you have seen there. And if I ask you in a one moment, what are the major achievements? As we know, there is various achievements, but I ask you, I would like to know if what is the major achievement with the HR Stock in award vertical? What you say? I think beautiful question, Rajiv ji. I would say that one of the major achievement is that today we are talking at your platform. अगर कुछ काम नहीं किया होता तो आपके प्लेटफॉर्म पे आज हम नहीं आते. But to talk about the exact work, what we have done is we started with very small work. As I said, that we started with Delhi NCR. So our first award was Delhi NCR, in which we had, because we were taking baby steps. We were not sure what is the kind of response we were getting. So we had only 9 winners. Then we moved to All India, and we did second award series, third award series, fourth award series. 4 awards have already been done successfully. And now we are already in the process of launching our 5th awards, that is the Global Excellence Awards. And we are doing that on a global platform. Our nominations will be from, we are speculating that we will be having nominations from 10 different countries. The jury will also be from different countries, including India, Ghana, UAE, Saudi Arabia, maybe from US, London. So we are growing very fast. I think in 1 year's span, from 9 winners, this time we will be awarding approximate 50 to 60 winners. From 9, we have come to 50, 60. And so far, we have almost recognized around 100 winners in different categories. And the beauty of our awards is that yes, we are a HR community. So HR का काम क्या होता है? सब लोगों को बांध के रखना as an organization, different verticals and departments को.
So what we do is हमारे जो award categories हैं, that is not only limited to HR. We have all the categories. We have HR excellence, we have education excellence, we have startup excellence, we have CSR excellence, we have women excellence. Women excellence का हमने एक separate category बना रखा है. We have lifetime achievement in HR. Then we have, जिससे किसी को ये नहीं लगे कि अरे हम छूट गए, हम तो इनके अप्लाई नहीं कर सकते. We have two set of different categories. One is below 15 years of experience and the other is 15 plus years of experience. जिससे कि ये नहीं लगे कि 5 साल और 20 साल वाले कैसे compete करेंगे. Definitely there is a difference in the kind of work and achievements. So we have two broad categories. So every strata is covered in these awards. So I think in 1 year time, if we have achieved so much and we are going global, approximately 10 countries nominations and 60 winners are going to be there. I think it in itself is a big achievement for us. I think a big achievement in a very short span. You are going to organize a global excellence award. It is a major achievement, I think. And the beauty, one more thing, I'm sorry to add one more thing. The beauty of these awards is that there is no nomination fee for these awards. We don't charge a single penny from the nominees, and still we give them social media visibility, we publish their interviews, we give them trophy, we give them certificate, we arrange a online or a hybrid mode, we arrange a offline event. We do everything and we don't charge a single penny from the participants or the winners. Everything is transparent. Everything is transparent. And finally, as you have a long journey of HR, 21 years experience, and if I आपकी खबर viewers and today the persons who in the field of HR professional, they are the HR professionals. If they like to know HR success mantra for the HR professional, what would you give the advice for? Beautiful question again, Rajiv ji. My success mantra is very simple. Being an HR professional, देखिए लड़ाई झगड़ा सब जगह होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सब जगह होते हैं. आई थिंक HR पीपल हैव टू बी लिसनर्स. अगर हम सिर्फ अपना ज्ञान देने में लगे रहेंगे, हम अपनी बात आगे करने में लगे रहेंगे, तो हम वही करते रह जाएंगे और निकलने वाले निकल जाएंगे लोग, और ये सिलसिला चलता रहेगा. सो माय फर्स्ट सक्सेस मंत्र इज दैट वी हैव टू बी अ लिसनर. Second is keep moving. Irrespective of, take baby steps, that is okay. If you fall, that is okay. Think, rejuvenate, move forward, stand up, move again. Know your people, know your passion, so that you are able to place them right in the right job. And then you see, वो कहते हैं ना कि एक कछुए को ले आओ एक काम में, और अगर वो पैशनेट है कछुआ, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही आपकी गाड़ी खींच ले जाएगा. So I think this is my mantra which I follow. बहुत ही सिंपल तरीके से आपने जिस तरीके से बता दिया, बहुत कम शब्दों में. आपकी खबर के जो व्यूवर्स हैं मोस्टली हिंदी नोइंग व्यूवर्स हैं, और वो मुझसे बार बार ये पूछते थे कि ये जो HR सक्सेस टॉक पे जो HR पर चर्चा करते हो, जो इस फील्ड के नहीं है वो बार बार पूछते थे कि HR है क्या. मुझे लगता है कि अगर उन्होंने आपकी ये 2-3 लाइनें लास्ट की सुन ली होंगी तो उनको समझ में आ गया होगा कि HR का काम क्या होता है, कितना इम्पोर्टेंस है. और HR प्रोफेशनल्स के लिए जिस तरीके से आपने बताया है कि कंपटीशन कहाँ नहीं है, आपने बहुत सही चीज बताई कि अगर उसी बातों का जवाब देते रहें तो फिर कैसे. सक्सेस मंत्र यही है कि आप अपना काम करते रहें. और जिस दिन मुझे जो लगता है, मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा. मुझे जो लगता है कि जिस दिन कोई भी एम्प्लॉयर की जरूरत जब बन जाता है तो उसको कोई भी हटा नहीं सकता. बिल्कुल. और HR प्रोफेशनल्स को यही देखना चाहिए कि वो किस तरीके से ट्रेन करते हैं, किस तरीके. आपने कितना अच्छा आपने बताया कि एक कछुए को अगर आप इस तरीके से छोड़ देंगे, आप बता देंगे, तो वो खुद ही जो है सक्सेस हो जाएगा. तो सक्सेस मंत्र आजकल जो टफ कंपटीशन चल रहा है
आपने बहुत अच्छी बातें बता दी। मेरे ख्याल से जो एचआर के ही नहीं, किसी भी फील्ड के होंगे, कंपटीशन कहाँ नहीं है, डे टू डे की लाइफ टफ होती जा रही है, और उसमें कई लोग बहुत तेजी से सक्सेस होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उन चीजों को समझा है, सीखा है, कुछ चीजों को अवॉइड किया है, कुछ चीजों को ग्रास्प किया है, और आज यही सबसे बड़ी, आप ही को देख सकते हैं कि कितना 51 ईयर्स की एक्सपीरियंस में कितना कुछ आपने सीखा, कितना कुछ आपने अचीवमेंट किया। तो जो आपकी खबर के व्यूवर्स हैं, मुझे लगता है कि इससे इजी वे में, चाहे जिस फील्ड के हों वो चाहे वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या प्रोफेशनल्स हो, या स्टार्टअप करते, किसी को भी वो सारी चीजें केवल 2-3 लाइनें केवल फॉलो कर, तो मुझे नहीं लगता कि उनको सक्सेस होने से कोई रोक सकता है। और आज जिस तरीके से आपने चर्चा की, आपकी खबर के व्यूवर्स को आपने बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में जिस तरीके से बता दिया, एचआर सक्सेस टॉक को आपने जिस तरीके से आप उसको लीड कर रहे हैं बहुत ही कम समय में, जो हिंदी के व्यूवर्स हैं जो अभी जुड़े हैं हमारे साथ में, उनको बता दें कि बहुत ही कम समय में एचआर सक्सेस टॉक को लीड करके सैफाली जी आज बहुत ही कम समय में आप लोग एक ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें, जैसे सैफाली जी ने बताया, कि इसमें किसी से भी 1 रुपया भी नहीं लिए जाते, टोटल ट्रांसपेरेंट होता है। और अब जो वर्ल्ड वाइड होने जा रहा है, मेरे ख्याल से लोग को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरीके से कम समय में भी और कितनी अच्छी प्लानिंग करके सक्सेस जो है मिल सकती है। एक लास्ट में आपसे एक और, ये जो आपका एक ये वीमेन विद विंग्स है, तो एक शॉर्ट में आज कभी उस पे आज शॉर्ट में आपसे जानना चाहेंगे, और उसके बाद में डिटेल में जानने के लिए फिर से हम टॉक शो करेंगे। लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्ट, आपकी मैंने वेबसाइट देखी तो मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगी, और जिस तरीके से देखा मैंने कि जो जिनको ये नहीं पता था कि वो भी कुछ कर सकते हैं, उनसे आप लोगों ने बहुत अच्छा काम करा दिया जी, उसके बारे में। जी बिल्कुल, एक्चुअली वुमेन विद विंग्स क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मेरा पैशन है, और ये उन लेडीज़ के लिए है जो कि हमारे 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पे हम काम करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि विमेन एक दूसरे के कोलैबोरेटर्स भी हो सकते हैं, खाली एनिमीज़ नहीं हो सकते हैं। हम ये वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली मैसेज का प्रचार करते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कहने में कि बहुत सारी विमेन हैं जो आगे आई हैं, आगे बढ़ के एक दूसरे का सपोर्ट कर रही हैं। और दूसरा जो वुमेन विद विंग्स काम करता है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने सपने, बहुत सपने लेकर आती हैं और वो पूरे नहीं कर पाती हैं, चाहे वो कोई होम मेकर है, चाहे कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई वर्किंग वुमेन है, कोई भी है। और वो क्यों नहीं सपने पूरे कर पाते हैं, क्योंकि एक एक्नॉलेजमेंट जो उन्हें चाहिए होता है, वो उन्हें कहीं एक कमी होती है जो वो नहीं उन्हें मिल पाती है। तो हम उन्हें वो एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि तुम कर सकती हो, तुम आगे बढ़ो, तुम सही दिशा में जा रही हो। तो वो हमारी टीम है जो उस पे काम करती है, और फिर वो एक से दूसरे से तीसरा बढ़ती चले जाती हैं, और बहुत सारी विमेन हैं जो अलग-अलग क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं हमारे साथ जुड़ने के बाद, और अपनी ज़िंदगी इतनी अच्छे से जी रही हैं, अपने सपने पूरा कर रही हैं। यही वुमेन विद विंग्स का काम है। बहुत अच्छा, और कभी उस पर फिर से अलग से चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने अचीवमेंट किया, जिनको आप लोगों ने गाइड किया, किस तरीके से आप लोग ट्रेन करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वीमेंस एम्पावरमेंट अगर देखा जाए तो सही तरीके से आप लोग इम्प्लीमेंट जी। कर रहे हैं, लोग सहयोग कर रहे हैं, और जो अब अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, लोग सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। और एचआर सक्सेस टॉक जिस तरीके से शोज कर रहा है, जो उनके एचआर के प्रोफेशनल को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने एक फाइनली, सवाल पूछा था अभी राजीव जी कि जो नॉन एचआर व्यूअर्स हैं वो आपसे पूछते हैं, मैं वहाँ बस आधा मिनट आपको लूँगी और मैं कुछ वहाँ कहना चाहूँगी, क्योंकि जो आपकी खबर के नॉन एचआर व्यूअर्स हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो आपकी खबर से जुड़े हैं, जैसे मैं भी आपका प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे आपके पोस्ट देखती रहती हूँ, तो जिस तरीके के आर्टिकल्स और जिस तरीके की न्यूज़ आप कवर करते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से एचआर सक्सेस टॉक काम करता है, नाम है एचआर, एचआर से जुड़े हुए काम करता है, पर काम हम सारे लोगों को, एक एचआर का जो काम है सबको जोड़ के एक साथ रखना, अलग अलग लोगों से काम कराना,
अब हमारे यहाँ डिजाइनिंग टीम भी है जो काम करती है, सोशल मीडिया टीम भी है जो काम करती है, एचआर भी है जो काम करती है, यूट्यूब भी है जो काम करती है। तो हम एक संस्था, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। करीब 100 के करीब वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, और वो वॉलंटियर्स हैं जो कि पैशनेट लोग हैं, जो कि यहाँ पे कोई 1 रुपया कमाता नहीं है एचआर सक्सेस टॉक में, पर क्योंकि उनका पैशन है कुछ सीखने का, कुछ करने का, कुछ सिखाने का। जो आपका भी प्लेटफॉर्म काम कर रहा है कि लोगों की खबरें आगे तक लाना, जैसे आप एचआर सक्सेस टॉक के साथ जुड़े हैं कि जो एचआर सक्सेस टॉक काम कर रहा है वो दुनिया तक जाना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं कि जी खाली एचआर एचआर के लोगों के लिए, हमारे करीब 1,50,000 लोग हैं जो एचआर सक्सेस टॉक से जुड़े हुए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो वो खाली एचआर नहीं है, बिजनेस लीडर्स भी हैं, सोशल मीडिया भी है, सब लोग हैं। तो हमारा काम है, जो आपका काम है, जो हमारा काम है, एचआर सक्सेस टॉक का काम है, वो ये काम है कि हम लोगों को अलग अलग डाइवर्सिटी पे हम काम कर रहे हैं कि अलग अलग देश के, अलग अलग इंडिया के, अलग अलग राज्यों के लोगों को हम जोड़ के रख रहे हैं। और अलग अलग वर्टिकल्स के, कि किसी को यूट्यूब आता है, किसी को पोस्टर बनाना आता है, किसी को बोलना आता है, हर तरीके के लोग हैं, हम उनको साथ में जोड़ के चलते हैं। तो ये खाली एचआर नहीं है, ये है लोगों को साथ में जोड़ के चलने के प्लेटफॉर्म्स। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने बताया जो है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर के साथ में जुड़ने के लिए। और एचआर पर चर्चा वाकई में आपने बहुत ही कायदे से एचआर के भी बारे में बताया, एचआर टॉक के बारे में बताया, और एचआर की फील्ड के लोगों के बारे में आपने बताया, जो नॉन एचआर प्रोफेशनल्स हैं उनके बारे में आपने बताया। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे लगता है कि आपकी खबर के जो व्यूअर्स हैं उनको आज काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी, और इसी तरीके से आपकी खबर के साथ में जुड़े रहें। और हमारे फिर एचआर पर चर्चा हम डिफरेंट सेगमेंट के लोगों के साथ में करेंगे। और शेफाली जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे साथ में व्यूअर्स जुड़े हैं, एचआर टॉक के लोग जुड़े हैं, और जो डिफरेंट फील्ड के लोग जुड़े हैं जो इस समय आपकी खबर को देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच धन्यवाद। राजीव जी, थैंक यू सो मच।